Now let's come to the main topic. I think that with the help of an activity you will be able to understand few points about shadow. That what is shadow? Shadow is actually what? Is a dark space formed behind an opaque object when it blocks light from any source of light. So what are the conditions for the formation of a shadow? That there must be a source of light, otherwise in complete darkness you will not be able to find any shadow. Another thing, an opaque object to obstruct the path of light. So first condition, source of light. Another condition is the opaque object, which is very important, because opaque object cast very dark shadow. Okay, shadow is very prominent. In case of translucent objects you may observe shadows, but the shadow is not that much darker, right? An opaque screen behind the object, and the screen should be opaque for the formation of the shadow, so that you can see shadow, right? So these are the three conditions which are very important for the formation of a shadow. तो शेडो कैसे बनती है? शेडो कब बनती है? जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट स्ट्राइक करती है एंड इट इज अनेबल टू पास थ्रू इट, देन there is complete darkness in that area and you will find the shadow. Okay, now I am going to discuss with you characteristics of a shadow. Characteristics of a shadow. So let us quickly come to the characteristics of a shadow. Shadow is always dark regardless of the color of the object, right? So shadow is always dark. It's not going to give you it's not going to help you in knowing what will be the color of the object, right? If you will look at the shadow, you will always find the shadow dark in color. Okay, and the second point, it only shows the dark outline of the object and not the details of the object. Means no detailing, only the shadow is going to show you the outline of the object and not the details. Right now I have a marker with in my hand, right? Can you see? If you will look here, could you be able to see what is written there by just looking at this point? No, na? So it will not show you any detail, but it can show you the outline of the object. And with the help of this, one can sometimes predict very accurately that what is that particular thing by seeing the shadow. And sometimes shadows are misleading also. You can get confused also, because you may have seen shows also जिसमें आपने shadows के through देखा होगा, बहुत अच्छे से shows दिखाए जाते हैं with the help of fingers, hands, है ना? तो वैसे वाले shows भी आपने देखे होंगे. The size of the shadow varies. One more point, it is formed in the direction opposite to the source of light. Light के opposite जहाँ भी shadow cast होगी, तो वो light के opposite direction में, opposite to the source of light कि उसमें आप देखेंगे shadow बनेगी. Next, the size of the shadow varies depending upon the distance between the source of light and object, which we have just seen in the previous video with the help of an activity. That when you will bring an object closer, suppose this is an object, right? Oh, I am writing over here. See, I am drawing a flower. This is a flower right now. Okay, this is the source of light. I'm throwing the light with the help of a torch. So obviously shadow will be formed at this point. It will show the outline only, right? But when I will bring this flower closer to the torch, what will happen? If I will bring it closer, a little closer, the size of the shadow will increase. Now you understand, you have seen video also. Size of the shadow will increase, and vice versa also. अगर आप shadow को, ये torch है, ठीक, आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं, ये स्क्रीन है जिसपे बन रही है शेडो, सपोज ये वॉल है अभी हमारे लिए. अगर आप इसको पास स्क्रीन के ऑब्जेक्ट के ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, तो शेडो विल बी स्मॉल. शेडो कैसी होगी? छोटी बनेगी, छोटी शेडो बनेगी. डिटेल्स तो नहीं दिखेंगी है ना.
शेडो विल बी स्मॉल। तो हमें साइज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट के बीच में अगर सोर्स से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो शेडो छोटी बनेगी, और सोर्स से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है सोर्स ऑफ लाइट से, तो शेडो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक, ऐसे ही अगर इसका उल्टा अगर आप सोचें, अगर ऑब्जेक्ट स्क्रीन से दूर जा रहा है, यानी इसका मतलब यही तो है, सोर्स ऑफ लाइट के पास आ रहा है, दूर जा रहा है अगर स्क्रीन से, यहाँ पे आ गया तो शेडो विल बी बिगर। ओके, और स्क्रीन के पास जा रहा है यानी सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा है, तो शेडो विल बी स्मॉलर इन साइज। Now next point, the shape and size of the shadow also varies with position of the source of light. Shape और size दोनों change होते हैं शेडो के with the position of the source of light. किस position से light उस पे फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट पे, उस पर डिपेंड करता है शेडो का फॉर्मेशन कि कैसी पोजीशन होगी। जैसे कि आपने अगर आप आज भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो देखें या उसके नेक्स्ट डे देख सकते हैं, अगर आपने आफ्टरनून में देखी, मॉर्निंग में अपनी शेडो देखिएगा। ठीक है, मॉर्निंग में देखिएगा, अर्ली मॉर्निंग आपको अपनी शेडो कैसी दिखती है। ओके, और जब नून टाइम में 12 o'clock के पर आप देखिएगा अपनी शेडो, 12:30 तक शेडो का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है। सो यू विल फाइंड दैट सनसेट एंड सनराइज, ओके, ड्यूरिंग दीज टू टाइम्स यू विल फाइंड द शेडो लॉन्गेस्ट, राइट? एंड during noon, at noon, what is the size of the shadow? The shadow is the smallest at noon. At noon shadow is the smallest. Okay, when the sun is overhead, sun जब overhead होता है, बिल्कुल सर के ऊपर होता है, sun is overhead. And during sunrise and sunset, shadow is the longest. Okay, so this is about characteristics of a shadow. And so what do we come to know? That opaque objects cast dark shadow. Translucent objects cast faint shadow, and transparent objects, you can even try this, they don't cast any shadow. Okay, so no shadow, this is important to know. So what I want to tell you is actually point source. What is point source? ये आप जब पिन होल कैमरा पढ़ेंगे then you will understand. Point source क्या होता है basically? If a source of light is very small, that is point source, a sharp and well defined shadow is formed from that source. If the source of light is very small, then a sharp shadow and well-defined shadow, sharp and well-defined shadow is formed. Sharp and well-defined shadow is formed. Okay? तभी पिन होल कैमरा जब आप बनाते हैं तो आपसे बोला जाता है जस्ट पॉइंट, जो होल होगा वो पॉइंट साइज का होगा, उसको बहुत बड़ा नहीं कर दीजिए सो दैट बहुत सारी रेज उसके अंदर नहीं आ जाए, अदरवाइज इमेज विल बी ब्लर्ड. ठीक है, इसी तरह से हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा. ऑल्दो थोड़ा सा ये आपसे एक्स्ट्रा है क्योंकि कभी कभी जब क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं तो आई रिमेम्बर लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमें दो शेडोज क्यों दिख रही हैं.
ठीक है, आप जैसे मैं आई एम मूविंग माई हैंड, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट, बट द वन शेडो इज डार्कर, okay, and other shadow which outlines that dark shadow, you will find it. I hope you can even do it by your hand also, by moving your hand. Right now the tube light is on, okay, अभी मैंने ट्यूब लाइट ऑन करी हुई है, उससे पहले बल्ब ऑन किया था टू शो यू शेडो. अब देखिए ट्यूब लाइट ऑन करी हुई है, तो ये कैसी, ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है. कैंडल कैसा होता है, पॉइंट सोर्स, बल्ब पॉइंट सोर्स, लेकिन ट्यूब लाइट कैसी होती है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. ठीक, तो ऐसी सोर्सेस जब ऑन होती हैं, लाइट उसमें से आ रही होती है, तो आप कैसे देखेंगे शेडो, एक दो शेडोज बनती हैं, वन इज डार्क, अनदर इज अ फेंट शेडो. ठीक है, तो जो डार्क होती है उसे हम बोलते हैं, जो सेंटर में होती है शेडो, जो मेन आपको शेडो लगती है, दैट इज एक्चुअली अम्ब्रा, और एक होती है पेनम्ब्रा. ओके, अम्ब्रा विच इज इन द सेंटर, and penumbra is a partial shadow, is a partial shadow. Okay, it is comparatively less dark, it is less dark. और ये वाली shadow कैसी होती है, umbra, it is dark which is at the center. आप सब ट्राई कर सकते हैं घर पे, आराम से आप देख सकते हैं, you will find umbra and penumbra. आपको सेंटर पे आउटलाइन दिखेगी जो कि बहुत फेंट होगी. ठीक है, क्योंकि एक्सटेंडेड सोर्स से बहुत जगह से रेज आ रही हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका हैंड पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पा रहा लाइट को. ठीक है, बहुत जगह से लाइट जो है पास भी हो रही है, तो यू विल फाइंड अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट शेडोज